clouds, different type of services. So in our last class, everything we have covered with cloud concepts. What is cloud? Cloud overview, right? तो ता विषय में complete details से जानते हैं और कहीं की cloud इतने popular और कहीं की हमें सीखेगा what is cloud and why we need to learn cloud, right? So everything हमें discussion करते ले तो आज रा क्लास रे जमती कि हम कहली कि हमें AWS ऊपर फोकस करियो, right? AWS ऊपर तो आज रा क्लास में हमें जानिबा काहे कि AWS हमें सीखिबा why should we choose the AWS service provider जमती कि कहछि आगरु there are different type of cloud service providers, right? There are different type of cloud service provider, then why should we choose AWS, right? ଯେମିତି କି ଆମର ରହିଲା Azure, Google Cloud, right? Digital Ocean, many more cloud service providers. So who are the cloud service providers? Those provides cloud computing services, right? Those provides cloud computing services are the cloud service provider, right? So let's understand more on what is AWS and why should we learn it, right? Let me make it slide slow. So if you see this particular snapshot, right, particular diagram here, the bar, here you can see this has been captured in 2023 market share. Okay, if you see here 2023 quarter one market share, the share, if you see here, Amazon is having 32%. Okay, 32% Amazon, and Microsoft Azure is 23%, Google 10%, and the rest of the 20 companies 26%. Okay, like that you can see here Amazon is leading the quadrant, right? So okay, let me ask questions. I'll choose one and I'll ask questions. Suppose Anupam, can you say, can you tell me what type of services in cloud service, what type of services in cloud? The type of services we discussed in our last class, right? Yes. The type of And services. like infrastructure services and platform services and software services, and two more I can't remember that. Perfect. So two more are the container as a service and functional as services, but those are not that much popular, but still that is being used. But mostly these three, if you remember, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So mostly the services covered under these three categories, right? Okay, perfect. Thank you, Anupam. So let's understand what is AWS. AWS hoshi kona? Amazon Web Service, right? What it is? It is a collection of remote computing services. It is a collection of remote computing services, also called web services. So, आजिका डेट रे हम जब देखिबा मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस हमें जहां भी यूज करूचे सब जगह कोन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस मैक्सिमम, राइट? आजिकल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस प्राय यूज होनी जदि भी तमे डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज भी करूछ बट दैट इज connected to the web through internet, right? So most of the web applications nowadays in the market, everyone using. Even आमे जदि देखिबा आमे मोबाइल एप्लीकेशन यूज करूचे, right? जेमति कि WhatsApp, Facebook, Instagram, but they still have their web applications. Through website we can access facebook.com, instagram.com, right? LinkedIn, WhatsApp, web.whatsapp.com. Even WhatsApp we can access through web applications. Through web, whatever we can access through web address, right? Through internet, right? Any browser, that will be your web application. So every services, whatever AWS provides, that are web services, that are web applications. Okay. What is Edge? AWS is a collection of remote computing services that together make up a cloud computing platform offered over the internet by Amazon.com. So AWS
the cloud service being provided by Amazon.com. Got it? By Amazon company. So AWS is a suite of hosting products that aims to take the headache out of the traditional hosting solutions. We can say it's a suite of hosting products which specifically aims to provide solutions to the customer, traditional hosting solutions to the customer. Okay, let's see why it is more popular, right? So it provides on the go pricing, pay as you go model. Yesterday we had discussed, right? First you have to use and then you can pay it, right? So what it says, Imagine took a refreshing approach to pricing its hosting when launching AWS. Every service you pay for what you use, right? So when the cloud era started, right? The services, cloud technology started. In that time, many of the cloud service providers, they were not providing that services, right? So AWS launched, which is completely, they provides 20, sorry, not 24, 365 days means 12 months of free usage. There are some terms and conditions are there. We'll just come to know when we proceed further. Okay, तो ता भितरे बहुत किछि आमे सिखिबा पाइबा AWS रे, जेमते कि 24 24 hours 12 months means 365 days ये फ्री प्रोवाइड करूछि, जोटा कि हमरो ट्रेनिंग पर्पसेस पर लर्निंग पाई बहुत यूजफुल। तो सेति पाई मोर engineers, DevOps engineer, but cloud engineers, they prefer to come and use AWS and do their practices. Every services you pay for what you use. So on the go pricing model, right? कौन होची ना हमें जोटा use करिबा तार ही प्राइस टा हमें पे करिबा, unnecessary extra amount हमको पे करिबा नहीं। This makes a lots of sense for server infrastructure as traffic tends to be very busty, especially the larger site is, right? जेतेबेले हमको माने कोन सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तो more traffic तो हमें customer increase हेला, right? तो जेतेबेले कोन करियो more customer will try to connect to our services, right? I'll connect to our applications. ଯେତେବେଳେ କौन more traffic आसीबा ଯେତେବେଳେ हम need हिसाब रे हमें infrastructure हमें change कर परिबा बा बढ़ई परिबा बा कमी परिबा our need हिसाब रे, right? तो सेति पे हमें जहां भी यूज करिबा तार ही पेमेंट ता करिबा, तार ही प्राइस पे करिबा, right? The traditional hardware for the most part goes unutilized of its life cycle. AWS helps deal with this problem by keeping it cheap during the slow time. Okay, traditional hardware for the most part goes unutilized for 90%. So what it says, we can traditional hardware for the most part goes unutilized for 90% of its life cycle. तो आमे जो हार्डवेयर नहीं तो हमर प्रोजेक्ट हिसाब रे कोन होछ ना जेतेबेले आमे हार्डवेयर गोटे प्रोक्योर कर दोचे, जदि आमे ऑन प्रेमिसेस नहीं छे बा प्राइवेट क्लाउड नहीं छे बा प्राइवेट आमे आमे प्राइवेटली आमे किछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करछे, प्रोक्योर करछे, प्रोविजन करिछे, आमे निजे किनि कि सेटअप करछे, तो जदि से हार्डवेयर यूज न होला, जदि हमर जति की दरकार सेति की यूज होछ, बाकी कोन अनयूटिलाइज्ड है कि अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी होछ, राइट? बट एडब्ल्यूएस कोन करछ ना हमर जदि भी किछि यूसेज हेलानी तो ता पई एडब्ल्यूएस डील करछ जे जति की तमे यूज करिवो तार ही, तो इट विल बी वेरी चीप फॉर अस, राइट? on the go pricing model काम करछ। नेक्स्ट कम्स फ्री टियर, जोटा कि मैं आगु कहि सलानी। फ्री टियर मान फ्री टियर प्रोवाइड करछि जोटा कि which provides enough credit to run an EC2 micro instance 24/7 all month,
24/7, all means it's around 12 months. Around 12 months, it provides free tier, right? Almost 1 year, right? 1 year it provides, around 1 year it provides free tier of EC2 micro instances. And result this, it comes with S3 storage. Also, it provides free S3 storage, like some storage, EC2 compute hours, load balancer time, and many more actually. If you see there, when we go through our AWS services, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ବତେଇଦେବି ଯେ କୋଉଟା ଫ୍ରି ଟିୟର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, କୋଉଟା ତମକୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଫ୍ରି ଟିୟର ରେ ଆସୁଛି ସେଟା କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଟିୟର ଆସୁଛି, ଫ୍ରି ଟିୟର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ତମକୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଏ କ୍ଲାସରେ ବୁଝିବା। ରାଇଟ, ଫ୍ରି ଟିୟର ମାନେ AWS provides freely use to use their services। ଯେମିତି ଦୁଇଟା ସର୍ଭିସ ତିନିଟା ସର୍ଭିସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଦେଇଛି, EC2, S3, ଇଲାଷ୍ଟିକ ଲୋଡ ବାଲାନ୍ସର। आ विषय हमें डिटेल्स रे पढ़िबा। ओके, this gives developer a chance to try out AWS API in their software। जेहेतु फ्री दउची तो प्राय डेवलपर्स बा ट्रेनर्स ट्रेनिंग जो लर्नर्स, राइट, से माने कोन कोन फ्रीली यूज करबा को चांस मिलुची, राइट। तो सेते पय मोर पॉपुलर, many customers are there, so which not only enhances their software but also tie them to AWS, which benefits the Amazon in the long term, right? So obviously जो कंपनी मैंने सब फ्री वीज देकरी, राइट, फ्री टियर ऑफर करछन, सब माने कोन कस्टमर एक्चुअली ट्राई करिबा पय सर्विसेज फर्स्ट अकाउंट करिवे, राइट, अकाउंट क्रिएट करिवे। So that is more important, which it provides free tier to use। माने गोटे वर्ष कंप्लीट फ्री तमे फ्रीली तमे EC2 इंस्टेंसेस बा तमरो सर्वर गोटे यूज करि परिबो। बट तार सम टर्म्स एंड कंडीशंस अछि, ता विषय में जेतबेले सर्वर वर्चुअल मशीन्स पढिबा ता विषय बा EC2 इंस्टेंसेस पढिबा ता विषय में तुमको बतै देबी। ठीक अछि। तापर हला परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस होछि कोन, सब जे कोनसी तमे एप्लीकेशन यूज करो बा सर्वर यूज करो तो हमें फर्स्ट कौन देखिबा, परफॉर्मेंस केमती कौन तार परफॉर्मेंस रोची। हमें वर्तमान मार्केट को गोटे कार किनिबा को गले बा गोटे बाइक किनिबा को गले कौन फर्स्ट देखु, तार माइलेज केते रोची, परफॉर्मेंस कौन रोची, राइट, प्राइस केते, कॉस्ट केते, राइट, ये सब विषय हमको देखिबा को पड़ियो। तो परफॉर्मेंस गोटे फैक्टर रोची, राइट, गोटे की रोची परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस बेस्ड हमको चूज करिया पड़ियो। सेमती जे कोन जे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तमे यूज करिबा को जाउछो, तमे कंपनी रे बा तम पर्सनल लाइफ रे बा तम डेवलपमेंट ओन डेवलपमेंट तमे से तमे चेक करियो को सर्विस प्रोवाइडर चीफ good quality, good performance provide coach, then you have to go for that, right? So come coach, in a traditional hosting environments, this probably would have meant downtime and 404 errors as the websites would have just gone dark. But in a truly cloud hosted environment like AWS, there is enough separations between processing and storage that sites can remain online and continue generating revenue even with reduced functionality. We host our sites out of the Northern Virginia cluster and experience no problems. But the performance power of AWS is in the storage. The distributed nature of EBS and S3 yields millions of input-output operations per second to all instances. Let me explain you. आमे तो परफॉर्मेंस विषय कहूचे तो मोस्टली कौन होची ना, तो आमे जदि गोटे ऑन प्रेमिसेस कथा मु कहूची, यदि आमे ओन इंफ्रास्ट्रक्चर आमे प्रोक्योर किनिथिबा तो सेतरे कोन होची ना, हमरो किछि गोटे पर्टिकुलर स्टोरेज किनिथिबा, सपोज 100 टेराबाइट रो बा 100 गीगाबाइट रो बा 100 टेराबाइट, सपोज 100 टेराबाइट स्टोरेज किनिचे, तो सेही सब आमे पेमेंट भी करथिबा। तो हमरो एप्लीकेशन यूसेज एते बढ़ी जिवो जे कस्टमर बढ़ी जो, तो 100 टेराबाइट्स रो जदी स्टोरेज हमको सफिशिएंट न होला तो कौन करबा, हमें पुणी मार्केट को जाई पुणी स्टोरेज किनी के आनी के सेटअप करिया पड़ियो। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम मनी, राइट। बट इठी कोन होची ना, बट सेही टाइम रे जतबेले हमर स्टोरेज आउट ऑफ स्टोरेज हे जाउची, राइट, आउट ऑफ मेमोरी बा आउट ऑफ स्टोरेज हे जाउची, तो हमर एप्लीकेशंस कोन होबन डाउन टाइम देबो, माने 404 एरर बा एप्लीकेशन नॉट फाउंड बा पेज नॉट फाउंड, बा बहुत सारा प्रॉब्लम्स में फेस करिबा।
ତ ସେଇଟା AWS କଣ କରୁଛି? It provides unlimited storage, guys. It provides unlimited storage. Unlimited storage. That means ଆମର storage ର କିଛି problem ହିଁ ହବନି ଆମକୁ ଯଦି ଆମର ଆମେ storage system ନେଇଛି ତ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ setup କରିପାରିବେ ତ ଯେତେ ବି increase ହବ applications usage automatically storage keep adding, so obviously performance will increase, right? ତ ସେଥିପାଇଁ high performance ଦଉଛି, right? Next ହଉଛି deployment speed. Deployment speed, how quickly you deploy your applications, right? So yeah, traditional product takes anywhere around 48 to 96 hours to provision a server. ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ସର୍ଭର କିଣିବା ପାଇଁ ବା ସର୍ଭର ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲି 48 to 96 hours ନର୍ମାଲି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତ 48 to 96 hours almost କେତେ 2 to 3 days ର ଟାଇମ୍ ନବ, ରାଇଟ୍? ଗୋଟେ ସର୍ଭର ନବା ପାଇଁ। ବଟ୍ AWS ରେ କଣ ହଉଛି within few seconds or minutes we can provision a server. That's what the deployment speed is very. So the AWS shrinks that deployment time to minutes. If you utilize the Amazon machine image, you can have a machine deployed and ready to accept connections in that short amount of time. जोटा कि तुमको 2 to 3 days of time नौची कोडी ट्रेडिशनल वे रे जोटी हमको 2 to 3 days time नौची सेटी हम AWS यूज करिबा hardly few minutes it will take to get your server ready. Okay, that's the deployment speed. Next comes security. So nowadays in digital era security is a very big concern, right? बहुत बड़ मुंड बथार कारण सिक्योरिटी, राइट? तो आम जेकोसी एप्लिकेशंस देखिबा तो सिक्योरिटी इज मस्ट. यदि सिक्योरिटी नथिबो देन योर एप्लिकेशंस पीपल विल लाइक ସେମାନେ କଣ ଭାବିବେ ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ୟୁଜ କରିବି ଏଟାକୁ, ତ ମୋର ଡାଟା ଆଜିକାଲି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଆମେ ନୋଇଂଲି ଅନନୋଇଂଲି ବହୁତ ସାରା ଆମର पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दउछे, राइट? तो ता भिତରେ ଯଦି कंपनी माने से सब सिक्योरिटी फॉलो न करिवे बा मेजर न करिवे कोन हो हमर ओन पर्सनल डाटा में बहुत सारा मिस करियो बा सम unauthorized person जदि access कले then it could be harmful for us, right? हम ପାଇଁ बहुत क्षति ही पारे, right? तो AWS provides very big and very tight security. It has few services which is called IAM, Identity Access Management, with which it restricted all the accesses and privileges for the users. Okay, what it does, this restricts the access to the resources such that ill-intentioned user like hackers or anybody who wants to harm you, who wants to damage your popularity or damage your company, they can't go inside, right? It restricts them from the internet. Okay, we'll see in details when we go and learn these services. We'll see in details how it is helpful for us with security perspective. Okay, next comes flexibility. Kemti flexible roche. The most important feature in the AWS is its flexibility. All the services work and communicates together with their applications to automatically judge, demand and handle it accordingly. So आमको एते difficulties face କରିବାକୁ ପଡିବନି ଯେହେତୁ maximum services you can get from AWS will be managed. That means that will be managed by AWS. So प्रत्येक service they will be very flexible and they can interact with each other.
तो आमको गोटे निजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने कौन करा पड़े आम कंप्यूटर रिसोर्स मेमोरी आनी सेटअप करा स्टोरेज को कनेक्ट कर नेटवर्क को कनेक्ट कर नेटवर्क नहीं अलग जगह कनेक्ट कर गोटे मशीन सहित आ गोटे मशीन कनेक्ट कर एटा वेरी बहुत डिफिकल्ट हम राइट गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर गोटे एप्लिकेशन इंस्टॉल कर किसी ड्राइवर इंस्टॉल कर ये सब बहुत सारा झमेला बहुत सारा झंझट आमको करार अच्छी जदि आम ओन इंफ्रास्ट्रक्चर ओन डाटा सेंटर बा सर्वर नौचे बट हियर इन AWS इट प्रोवाइड्स वेरी फ्लेक्सिबल मीन्स आम जहाँ जहाँ भी दरकार आमको आम चाहिए इजिली आम नहीं पार आमको किसी बदर हवा पड़ोन माने टेंशन नवा पड़ोनी कनेक्टिविटी विषय में किसी देखा पड़ोनी एवरीथिंग विल गेट कनेक्टेड each other right they can communicate together okay so combined with the fantastic API and the Amazon machine images you create you can have a complete customized solutions that provision a server instances in under 10 minutes. Within 10 minutes, you can get all the provision as per your requirement, right? So, I mean, যদি basically देखिबा, right? Flexibility in every aspect, right? We want flexible. तुम्हें normal तम life रे भी, right? समस्ते कौन चाहती जे एते कौनसी जे कौनसी काम हो बा जे कौनसी जिनसे तमें करो जेमती it should be very easy to use, very easy to connect, very easy to create, right? तो ये सब हम जमती कष्ट करिया किछि पड़ू नथि right? Everyone wants flexibility. Okay. मिस्टर बुझी गलो right? कौन AWS provides करे तार किछि की टर्म्स अछि बहुत बहुत इंपोर्टेंट ए की टर्म्स को मुझे बुझेबी तुमको आ यही सब की टर्म्स AWS रे राइट क्लाउड टेक्नोलॉजी रे तुमको बहुत बहुत दरकार बहुत इंपोर्टेंट ये सब की टर्म्स की सब नॉर्म्स तुमको बहुत इंपोर्टेंट ओके wait a second guys so let's discuss about some key terms okay so key terms with a count hoche region it's not only for AWS but also for all सर्विस प्रोवाइडर ऑल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जेकोन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें चाहिए हमें एटा यूज कर पाइबा एटा हमको निहाती दरकार क्लाउड कंप्यूटिंग रीजन माने कौन in AWS region is a physical location around the world region is a physical locations माने देखो जदि कहबे आमे समस्त एक्चुअली कोन we all are belongs to Odisha, right? आमे समस्त ओडिसा रो ही अच्छे बट ओडिसा रो को रीजन को लोकेशन राइट सेटा स्पेसिफिकली देखियो पड़ी ओडिसा रो जेमते हम 30 districts अच्छी राइट but yeah 30 districts are there so आ भितर हमें को डिस्ट्रिक्ट समस्त को रीजन रो आसीचे राइट तो हमर फिजिकल लोकेशन हला सेठी but we are see virtually connected we are virtually connected right even Swaroop is staying out of state right maybe in Mumbai and Subhasri in Bhubaneswar Matru in Jagatsinghpur some and Anupam I think Sachin from Bangalore Anupam somewhere but we are still connected virtually in this classroom right but region कोन हम region कोन हला जोटा कि गोटे फिजिकल लोकेशन जोटी एक्चुअली हमें रोचे राइट सो हमर डाटा सेंटर हमर कंप्यूटर
कोटे गोटे फिजिकल लोकेशन रे रही जोटा कि आम कनेक्ट करूचे राइट तो सेटा हमर रीजन हे जिवो so in AWS region is a physical location around the world where they keep the group of data centers डाटा सेंटर ऊपर बुझे डाटा सेंटर कौन ओके ग्रुप ऑफ डाटा सेंटर एटा मन रखिदा जो की टर्म्स गुरा तुमको कहूची एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट खाली AWS नु जे कोन सी क्लाउड सिखिबे सब नियाती दरकार तुमको ठीक अछि and each region consists of multiple isolated and physically separated availability zone एडी हमें केतरा टर्म्स सिखले रीजन गोटे टर्म्स जानछे रीजन विषय शिखुचे तापर हम डाटा सेंटर जानबो डाटा सेंटर कोन देन multiple isolated and physically separated availability zones कोन जानिबा कोन कहला फर्स्ट region is a physical location around the world where they keep their group of data centers simple and each region प्रत्येक region consists of multiple isolated physically separated availability zone okay multiple availability zone isolated and physically separate अलग अलग isolate हेकरी सब availability zones अच्छी देखिए बोले AWS 25 regions around the world केतरा regions 25 regions till now and 6 more are going to open shortly so total 31 regions they are going to start 32 regions all over the world AWS has their data centers AWS has their data center okay बुझी पड़लो region कौन is a physical locative or physical locations around the world where the data centers are available simple right so next बुझी availability zone कौन what is availability zone okay ये जो diagram हमें देखुची particular diagram इटा हला suppose कौन region complete हला region आ भीतर हमर सब availability zone but data centers we can see it here right data centers we can see here so availability zones कौन availability zones are distinct isolated locations within an AWS region within an AWS region availability zones are isolated locations right तो ये हमें देखिए यदि गोटे region हमें नहींचे एटी तीनटा availability zone suppose अच्छी separated हेगी AG1 AG2 AG3 जदि हमें ओडिशा को गोटे region धरिबा okay let's imagine let's imagine okay let's imagine ओडिशा होची गोटे region ए region रे भुवनेश्वर होची गोटे जगह जोठी के हमर डाटा सेंटर रहउची availability zone कटक रे गोटे availability zone रहउची सपोज बरहमपुर रे गोटे availability zone रहउची सपोज भुवनेश्वर कटक बहुत पाखा पाखी हे गला तो एटा छाडी दियो संबलपुर रे गोटे availability zone गोटे बरहमपुर रे रहला गोटे कोन भुवनेश्वर रे रहला तो कोन हे गला जो बड़ रीजन ता हमर रहला रीजन रे हम तीनटा availability zone रखि देले one in BBSR another suppose in Sambalpur right Sambalpur suppose another one in Berhampur right all three but basically AWS ओडिसा रे किछि रीजन नाही मु जस्ट गोटे एग्जांपल दोछि ओके तो हमें रीजन को कोटी इंडिया रे कोटी अछि ओके अवेलेबिलिटी जोन बा रीजन केतेटा अछि सेटा हमें देखिबा इंडिया रे एक्चुअली दुईटा रीजन अछि गोटे अछि कोन आमची मुंबई गोटे अछि मुंबई रे आ गोटे अछि हैदराबाद रे ठीक अछि ओई दुईटा रीजन अच्छे इंडिया ता विषय हम डिस्कशन करें बस बतई दउची मु ओडिसा रे गोटे एग्जांपल नउची बट ओडिसा रे कोनसी रीजन बा कोनसी अवेलेबिलिटी जोन नाही ठीक अछि सो कोन कहला अवेलेबिलिटी जोन्स आर डिस्टिंक्ट आइसोलेटेड लोकेशंस विद इन an AWS region there are 80 availability zones currently AWS has केतरा अछि टोटल 80 टा availability zones
Okay, one availability zone have is a point मन रखिताओ. One availability zone may have one or multiple data center. One availability zone may have one or multiple data center. This AZ offers us the ability to operate production applications and databases that are more highly available, fault tolerant, and scalable. Highly available, fault tolerant, and scalable. कौन कहेगा? One availability zone have one or more data center. ये जो availability zone गोटे हमें suppose VBS रे देखले, एठी मुझे एठी it can have one or two or three data centers. So data center कौन? Next slide हम बुझिबा. This AG availability zone रो short form मन रखो AG. Okay, AG availability zone. AZ offers us the ability to operate production applications and databases that are more highly available, fault tolerant and scalable. ये जो words highly available माने कौन, fault tolerant कौन और scalable कौन, आ विषय में बुझिबा. ठीक अछि. हमें details upcoming slide रे next class रे हमें availability high availability विषय जानिबा, fault tolerant विषय जानिबा, scalable विषय जानिबा. ठीक अछि. Data center हम जानिले कोन, availability zone may have one or more data center, right? So कोन data center कोन, data center हमें देखिते basically जो माने भी कंपनी काम करछ, तुम सर्वर रूम को जो कंपनी सर्वर रूम को जेकोसी गोटे सर्वर रूम को कोठी की भी जाओ, राइट? गोटे सर्वर रूम रे देखियो बहुत सारा कोन सिस्टम बा हार्डवेयर सब थिबो, तो केबल सब कनेक्टेड हेतिबो, तादर कंप्यूटर्स लागिथिबो, राइट? तब हमें नॉर्मली डाटा सेंटर को जोटी कि हम कंप्लीट सर्वर सेटअप हेतिबो, राइट? सो ए डाटा सेंटर इज फैसिलिटी a dedicated space within a building or a group of building composed of networked computers and storage that businesses and organizations use to organize, process, store, and disseminate large amount of data. Right? So, जोटी हमर group of computers थिबो, storage system थिबो, memory थिबो, network connected हेतिबो, आउ सब जग हमर data storage हेतिला. Basically गोटे कंपनी रो valuable things कौन? Data. तो से डेटा को सब बड़े हमें केमती स्टोर करके रखिबा. नॉर्मली सब कंपनी they would have their own data center, physical data center से माने सेफली स्टोर करी. तो ये जो डेटा सेंटर को हमें चाहिए आम इंफ्रास्ट्रक्चर बा गोटे बिल्डिंग नहीं कि हमें निजे सर्वर किनी करी बसई पारिबा. तो सेटा है कोन हेतिबा हमर ऑन प्रीमाइसेस आम ऑन प्रीमाइसेस माने आमे निजे आमे ऑन प्रीमाइसेस फिजिकल सेटअप डाटा सेंटर आमे करछे. बट ए जो डाटा सेंटर को जदि आमे थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करिबा, इंटरनेट द्वारा एटा को कनेक्ट करिबा, तो आम पई एटा कोन हिजिवो? क्लाउड सर्विस. क्लाउड सर्विस हिजिवो, राइट? जदि आमे इंटरनेट टे करी, तो AWS कोन करछि? AWS बहुत सारा डाटा सेंटर खोली देछि. Amazon कौन करछि? बहुत सारा डेटा सेंटर खोल देछि अराउंड द वर्ल्ड. जेमति कि हमें देखले 31 रीजन्स, 31 टा रीजन रे तारो डाटा सेंटर से खोल देछि. तो हमें से डाटा सेंटर रे गोटे जगह गोटे डाटा सेंटर को कनेक्ट करछे, गोटे सर्वर नउछे, से सर्वर टा सपोज हमें यूएस रे यूएस रीजन रु गोटे डाटाबेस नेले बा गोटे सर्वर नेले. तो आम पई आम सिस्टम टा कोठी अछि? Physically actually it is located in USA. आमे कनेक्ट करछे को ओडिसा रु, आम पई सेटा हेगला वर्चुअली कनेक्टेड रिसोर्सेस. तो ताको हमें क्लाउड सर्विस कहिबा. सिंपल बुझी पालो, राइट? ओके, एटा जदि हम सिंपल देखिबा गोटे फुल रीजन, सपोज हमर एटा रीजन टा हमर, ओके सपोज ए रीजन टा हमर मुंबई रीजन. ओके,
मुंबई रीजन मुंबई रीजन रे हमर अवेलेबिलिटी जोन जो ग्रीन कलर आम देखुचे सपोज अवेलेबिलिटी जोन suppose one is in अंधेरी तो ना दिया मुंबई बट विल गेट इन एवरी फील्ड ऑफ महाराष्ट्र जेकोसी जगह रखी मे बी अवेलेबिलिटी जोन कौचे तो এটা আছে सपोज नावी मुंबई ये अवेलेबिलिटी जोन है नावी मुंबई सपोज आ गोटे है सपोज कौन बोरीवली मुझे ना जानी कहीदेली बोरीवली आउ के बोरीवली शायद जाए हो तो कौन है आम जो अवेलेबिलिटी जोन रहा तो ये अवेलेबिलिटी जोन जो सपोज अंधेरी रे अच्छी रीजन आमर है मुंबई राइट अंधेरी रे अच्छी तो अंधेरी रे कौन होची ना आमर केतरा अच्छी इटा कौन कहबा डेटा सेंटर राइट ये जो स्मॉल बॉक्स है डेटा सेंटर आमर डेटा सेंटर जोटी कि आमर सब हार्डवेयर कंप्यूटर्स नेटवर्क सब थी तो ये अवेलेबिलिटी जोन रे आमर सपोज केतरा है एटी अच्छी दुईटा 1 2 एटी भी 1 2 एटी अच्छी 1 2 3 4 चारटा डाटा सेंटर नावी मुंबई रे आमर चारटा डेटा सेंटर अच्छी राइट देन अंधेरी रे दीटा बोरीवली रे दीटा राइट तो डाटा सेंटर तो बेसिकली टोटल जब हमें काउंट कर दवा मुंबई रीजन रे केतरा डाटा सेंटर 8टा डाटा सेंटर अच्छी बट इन 3 अवेलेबिलिटी जोन रे तो स्पेसिफिकली एटा आइसोलेटेड काहे की रखा जाए ता पछरे गोटे बहुत बिग रीजन अच्छी जेटा कि तुमको एक्सप्लेन कर देबी ठीक अछि काहे की याकू आइसोलेटेड सेपरेट करा जाए सेठी हमर आसुची हाई अवेलेबिलिटी फॉल्ट टॉलरेंट ओके हाई अवेलेबिलिटी शॉर्ट टर्म बुझे दोची सपोज हमर एप्लीकेशन आमे एप्लीकेशन सपोज मु एठी रखिची अंधेरी रे I would application same applications I'm also hosted I have also hosted here in Navi Mumbai that's was I तो कौन हला जदि in case due to some disaster अंधेरी डेटा सेंटर डाउन हो गला फ्लड आसला बा earthquake आसला किछ भी आसला तो डाउन हो गला तो मो एप्लीकेशन कौन जदि मु एठी न रखिथि मो एप्लीकेशन कौन एक्सेस हबनी कोडी अंधेरी रे but it is still there in Navi Mumbai जदि मोर अंधेरी रो availability zone down हो गला but data center is out of control but it's down then we can still have access to our another application which the same applications which is hosted in another availability zone so customer will not impacted they can still access your application जदि तमे एठी application रखिनो तो कौन है तुम application down हो जिवो कस्टमर एक्सेस करि परिबनी you will get lots of loss right तो एठी reputations will get damaged तो एठी हमें हाई अवेलेबिलिटी कांसेप्ट यूज करूचे सेथि पई गोटे रीजन रे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बा मल्टीपल डाटा सेंटर करिकरी आइसोलेटेड वेज रे सेपरेटली से माने रखि थांती जदि गोटे डाटा सेंटर break होची then we will have another data center which can serve the purposes बुझी पारलो सेति पे ताकू हाई अवेलेबिलिटी कोड अछि बुझी पारलो हाई अवेलेबिलिटी गुड नेक्स्ट edge location so what is edge location the edge location actually आरबी तमे डेली यूज करूछ एक्चुअली हिज लोकेशन तमे डेली यूज करूछ बट मैं तुमको बुझे दल तमे जानि परियो कोन तमे यूज करूछ राइट
ଆଉ ସେଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଏ ସାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲାଉଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ କ୍ଲାଉଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା a site that CloudFront uses to cache copies of your content for faster delivery. Cache copies of your content for faster delivery to users at any location. Remember, edge locations means this is a site which the CloudFront is one of the service, AWS service, okay, which uses to cache copies of your content for faster delivery to users at any location. There are currently 17 CloudFront edge locations in India. India रे केतरा अछि total 17 टा अछि. चारिटा Hyderabad रे 4 in Hyderabad, another 4 in New Delhi, 3 in Bangalore and 3 in Mumbai, 2 in Chennai, 1 in Kolkata. तो आमे कहबा तो आमे तो जानले दुईटा रीजन अछि इंडिया रे बट एटी कोन कहूची सबु जगह रे चारटा तीनटा बेंगलोर रे अछि दिल्ली रे अछि कोलकाता रे अछि मु कोन कहली हमरा रीजन अछि दुईटा जोटा केला गोटे मुंबई आ गोटे हला हैदराबाद राइट ए दुईटा रे हमरा कोन हला रीजन अछि दुईटा रीजन हमरा इंडिया रे AWS regions बट तर एज लोकेशन कौन करछि से हैदराबाद रे चारटा रखिछि आउ चारटा न्यू दिल्ली रे रखिछि तीनटा बेंगलोर रे अछि मुंबई रे तीनटा चेन्नई रे दीटा कोलकाता रे गोटे काहे केटा रखिछि तार डिटेल्स में हमको बुझे देबी ठीक अछि फर्स्ट एज लोकेशन हमें जानिले कोन पई इट इज अ साइट वेयर CloudFront uses to cache copies of your content for faster delivery. I mean, cache copies of your content for faster delivery to the users at any locations. Okay, now let's see this diagram. Got a region etala, right? One region, another sub region, alga region, it alga users sub achanti. So suppose a user, it is suppose user Odisha re achi. ये यूजर सपोज चेन्नई रे अछि ये यूजर दिल्ली रे अछि ये यूजर सपोज केरला रे अछि केरला ओके गॉट इट नाउ तो कोन हबो ए माने सब ए रीजन रहि छथि बट हमर सर्वर कोड अछि ए पर्टिकुलर सपोज एटी अछि सपोज एटा हला ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हम सर्वर रहिला ऑस्ट्रेलिया रे ओके एटी हमर सर्वर रहिला ऑस्ट्रेलिया रे तो मु चाहूची मु जो कंटेंट गोटे सपोज गोटे मूवी देखुची मूवीटा अच्छी एटी बा गोटे कंटेंट पढ़िया चाहूची सर्वर रु कंटेंट आसीबो तो सर्वर रु कंटेंट आसीबो कोडी ए रीजन रे रहला तो मु ओडिसा रे ताई कि जतले कंटेंट देखिबी जदी मोर किछि कॉपीज कासे नथिबो बा कोनसी कॉपी मोर लोकल नथिबो से कोन करिवो ना एटी कनेक्ट करिवो ए कंटेंट को रीड करिवो तो ये जो कनेक्शंस फ्रॉम ओडिसा टू ऑस्ट्रेलिया the net based on the network bandwidth right it will take some time कौन buffering हबो बहुत टाइम लागिवो the complete document बा content टा read करिया था so user experience will be very bad जदि तमे slow experience पाइबो definitely user will get frustrated right तो सेते पई कोन करछि ना सब लोकेशन रे कोन करछि ना एज लोकेशंस बसे दउछि धर मु ओडिसा रे अछि मोर नियरेस्ट लोकेशन कोन हबो कोलकाता जोटी गोटे एज लोकेशन अछि चेन्नई रे तार निजर चेन्नई पाखरे दुईटा अछि दिल्ली रे दुई पर अछि केरला वाला से कोन करिवे तांकर नियरेस्ट हबो चेन्नई तांकर चेन्नई लोकेशंस अछि दिल्ली ऑलरेडी हैज बीन हैविंग द एज लोकेशन कोन हबो ये जो डायरेक्ट हमें कनेक्ट करूची राइट तो एठी जो एज लोकेशंस बसिला राइट एठी ये जो कस्टमर यूज कर से माने कोन करछ ना से एज लोकेशन रु
कंटेंट आनुचंती ना कि डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वर फ्रॉम दैट रीजन तो कौन होउछ ना जेतले फर्स्ट कंटेंट जने सपोज ओडिसा रो गोटे लोक गोटे धर गोटे कंटेंट सपोज ओडिसा रो गोटे लोक गोटे कंटेंट रीड कला से कंटेंट टा कौन होबा ना नियरेस्ट लोकेशंस जोटा कि अछि हमर एड्स लोकेशंस सेठी स्टोर हे गला कॉपी गोटे कैश रे मेमोरी स्टोर हे गला तो सेई लोक आउ गोटे कस्टमर जदी सेटा को सेई सेम कंटेंट चाहूची तो सेम कंटेंट से एठू न आसी कोड आसीबो एठू आसीबो नियरेस्ट एड्स लोकेशन रो आसीबो तो एटा कोन हे गला फास्टर हे गला राइट तो विल गेट यूजर एक्सपीरियंस वेरी फास्टर तो से एज लोकेशंस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन रे रखुछि बुझि पारलो एज लोकेशन रे काम कोन गोटे एग्जांपल दियो मते एते बुझि सारन तो मते हुए तो तम माइंड रे आसी जाय तो गोटे एग्जांपल दियो ये कहबो गोटे एग्जांपल दियो मते anyone can tell me what could be the example for this best example हम डे टू डे सब बेले यूज करछो ना माइंड रे आसुनी तो हमें समस्त नेटफ्लिक्स यूज करछे ना नहीं प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स तो नेटफ्लिक्स ता सर्वर रखी ची कोठी इंडिया तो नहीं मे भी थाई पारे कोठी बट एटलीस्ट ओडिसा तो नहीं राइट तो नेटफ्लिक्स सपोज तार सर्वर यूएस रे रखी ची तो हमें जदी गोटे वीडियो गोटे इंग्लिश मूवी हमें देखिबा कौन सी मूवी देखिबा गोटे राइट तो से मूवीटा कौन से सर्वर रु आम पाखु आसीबा पाई तो कौन हम ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम राइट बफरिंग नेटवर्क आजिकल तो 5G 5G स्पीड रे आसुचे हमें बहुत जल्दी देखि दउचे थिंक अबाउट जस्ट गो बिहाइंड 15 इयर्स बिफोर 2G रे थिले तो सेतबेले गोटे मूवी देखिबा केते डिफिकल्ट थिला राइट सेतबेले एबं एड्स लोकेशन भी कोन कैसे भी कोन जानि नतले हो भी नथिला तो गोटे गोटे मूवी देखिया पु इवन आई रिमेंबर in my college days right when we were watching movies even there were 2G yeah 2G was introduced maybe that time data was introduced that time maybe when we are looking that movie it was taking hours of time किछि बाट बफरिंग हबो बफरिंग बुलतो बुल सला पर मूवी अल्प लोड हबो 5 मिनिट लोड हबो 5 मिनिट हम देखि दो पुनी लोड हबो पुनी मूवी बफरिंग करिवो राइट तो ये सब टाइप रो चलतला वर्तमान नेटफ्लिक्स से कोन हम इमीडिएटली within just finger click we are seeing watching the movies right so केमते होउची तो Netflix would have kept these locations nearest to us the movies will get casted to nearest locations and we can easily watch these movies very fast right perfect okay that's all guys जहाँ भी मु आमे पढ़िले आज राइट ए सब विषय रे डिटेल्स रे एड्स लोकेशंस राइट आमे आ कोन जानले डाटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन राइट रीजन रीजन हला कोन a region consists of multiple isolated physically separated availability zones और हमें जदी सिंपल भाषा रे कहबे रीजन होची गोटे गोटे कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन it holds one or multiple availability zone तो availability zone कौन availability zone holds one or multiple data center simple so availability zone is the subset of region and data center is the subset of availability zone जेमति कि मोर एग्जांपल देतो बतैतली जदि एटा रीजन हैला एटा हला availability zone right availability zone भितर हमर data center रोज data center रहला right एटा region तो availability zone AG एटा हमर simple data center बुझिलो अच्छा हाँ, सचिन मते कहलो AWS
କେତେ months free ଦଉଛି? Free tier କେତେ months ଦଉଛି? ସଚିନ? AWS free tier କେତେ months ଦଉଛି? ଅନୁପମ? 1 year. 1 year. 12 But months, right? It provides 12 months of free tier. We can use freely the services for 12 months, right? ये जो questions जहाँ भी मुझे पढ़े definitely काली पचारिबी। तमे so यदि मते satisfactory answer देला then move करिया नले move करी किसी लाभ ही नहीं। पढ़ी चलती भी तमे खाली सुनी चलती हो but at the end nothing will happen. so there is one doubt. Yeah, sure. Please tell me. Can you go to that slide, edge slide? Edge location, right? Yes, edge. Edge locations, okay. Yes. So my doubt is like whenever we are accessing from when the edge location, so the data exactly like is stored in the size of the data exactly stored in the edge location, or the I mean there is some type of link to that region. Perfect. Nice questions. Yeah. See, actual data will be stored in the region where the actual server will be there. So here the content will be available. But here just copies means it's just cache, kind of a small cache memory it will take. It's a Yes. copies will be stored here. Sometimes we have to delete this cache. तो हमें देखुथिबे हमें तो कंप्यूटर राइट हम विंडोज लैपटॉप जतो यूज करूचे किछि टेम्पररी फाइल रहि जाय किबा हमें जतो क्रोम यूज करूचे फर्स्ट टाइम हमें जदी कोनसी गोटे वेबसाइट ओपन करथियो देखिथिबो सेटा टिके टाइम ने लोड होबा पई बट नेक्स्ट टाइम हमें तो सेही वेबसाइट ओपन कर पटकिन ओपन हे जो केमती Yes. कैसे कॉपीज ता कैसे स्टोर ही थाए राइट yes तो yes सेटा हम ओपन है सिमिलर कांसेप्ट हियर okay yes got it. बुझ पड़लो Yes. Good. So next class to हमें कौन करबा जो सर्विस हमें जो पढ़िबा फर्स्ट हमें कौन करबा सिक्योरिटी सर्विस ऊपर फोकस करबा जोटा कि हम फर्स्ट सर्विस हबो IAM ओके देन नेक्स्ट सर्विस हमें जिबा स्टोरेज ऊपर S3 तापर हमें जिबा EC2 जोटा कि हमर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कराओ VM बा वर्चुअल machine virtual machine solutions. तो हमें ए फेज रे जीवा tomorrow classes will learn this one next will learn this one next will learn this one okay ए तीनटा हमें पढ़ी सारला परे नेक्स्ट मूव करिवा हमर लाइनक्स आउ सबस्क्रिप्टिंग राइट तो जमा क्लास मिस करिवनी कंटिन्यू क्लास चलिबो वर्तमान बट से हिसाब रे तुम माने भी प्रैक्टिस करी चलो मु क्वेश्चंस डेफिनेटली कली पचार जहाँ भी आज पढ़ले तो आज वीडियो लिंक मु शेयर कर देबी तमरो जो एप्लिकेशन एक्सेस देछि ताते शेयर कर देबी ठीक है जी that's all guys for today's class see you tomorrow okay चलो बाय बाय अब डाउट सब रेडी कर रखी था मुझे डाउट पचारियो अच्छा